رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. Today we are going to start topic number 11.6, which is about electric potential. Quotation for today is: your life does not get better by chance. It gets better by change. Changes are always for good. So try to accept the change in your life. Now let us consider a positive charge Q which is placed between the oppositely charged parallel plates. This charge Q will experience a force which is equals to the amount QE, and it will be experienced by the presence of the electric field. And if the charge is allowed to move freely in an electric field, it will move from plate A, from the positive plate, towards the negative plate, which is plate B. And it will acquire the kinetic energy. In order to move the charge against the field, external force must be applied, which has to be equal to the electrostatic force but opposite in direction. And this force will maintain the equilibrium by preventing the charge from acceleration while moving the charge against the field. So we have to work done on this charge, and this work will be done by the force carrying a positive charge from point B to point A without disturbing its equilibrium state. So the change in potential energy of the charge Q will be defined as it equal to the work done by the force in carrying the charge Q from one point to another against the electric field. Mathematically, we can write this thing as delta U, which is the change in potential energy that has to be equal to the work done by the force in carrying the charge from point B to the point A. Since it is the change in potential, so we can write the potential energy, the higher potential energy, which is at point A due to the positive charge, minus the low potential energy, which is U of B. This must be equals to WBA, which is work done by the force in carrying the charge from point B to the point A. सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या स्टडी किया है? सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्लेस करते हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, तो वो इन चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ उस फोर्स की वजह से जो है वो मूव करता है और वो फोर्स इक्वल होती है क्यू ई के। लेकिन अगर हमें इसी पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करना होगा तो उस केस में हमें इस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना है, और इस बात का नोट रखते हुए कि इस चार्ज को हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे, हमें इक्वल अमाउंट की फोर्स प्रोवाइड करनी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस चार्ज के ऊपर जितना भी हम वर्क डन करेंगे वो उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो रहा है। सो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स द पॉइंट ए। So as a result, if this charge is released from point A, it will move from point A to B and will gain an equal amount of kinetic energy.
And the potential difference between 2 points is the work done in moving a unit positive charge from one point to another while keeping the charge in electrostatic equilibrium. So इसका मतलब है कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान वो इक्वल होता है जो कि हम वर्क डन करते हैं किसी भी चार्ज पे उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए. So हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं एज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज. So since work done on a unit charge जो कि हमारे पास equal है change in potential energy by the unit charge, it must be equals to the work done on the unit charge. So इसको simply अगर हम solve करें delta U जो कि हमारे पास equal था UA minus UB के, so it will be equals to UA divided by Q naught minus UB divided by Q naught, and the change in potential energy per unit charge is equals to potential difference जो कि हमारे पास equal होगा VA minus VB equals to delta V. So the potential difference can be defined as the work done in moving a positive charge from one point to another point while keeping the charge in electrostatic equilibrium. किसी भी positive charge को अगर आपने मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट उसको इक्विलिब्रियम में रखते हुए तो जो आप वर्क डन करोगे ऑन अ यूनिट चार्ज दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वेयर द वी ए एंड वी बी इज the electric potentials of the point A and point B. So we can define the potential energy at point A as Q naught into VA, and the potential energy at point B is equals to Q naught VB. So thus delta U, which is the change in potential energy, it will be equals to Q naught delta V, which equals to the work done ऑन द यूनिट चार्ज. जो हम किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क डन करेंगे वो वर्क डन इक्वल होगा क्यू नॉट टाइम्स डेल्टा वी के, जबकि क्यू नॉट हमारे पास वो पॉइंट चार्ज है और डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स. SI unit of potential difference is volt, which is also equals to joule per coulomb. So we can define 1 volt as it is the potential difference between 2 points in an electric field if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another. हमारे पास जो 1 वोल्ट है वो इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन 2 पॉइंट्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अगर हम किसी भी 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जाउल का वर्क डन करते हैं, बिकॉज हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था क्यू नॉट डेल्टा वी. सो 1 कूलम चार्ज के ऊपर हम अगर 1 जाउल का वर्क करेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ 1 वोल्ट. So now the multiples and submultiples of the unit for the potential difference, 1 millivolt milli के लिए जो आप सब मल्टीपल यूज़ करते हो that is 10 to the power minus 3. 1 microvolt, micro is for 10 to the power minus 6. 1 kilovolt which means 10 to the power 3 volt. 1 megavolt which is 10 to the power 6 volt and 1 gigavolt which is 10 to the power 9 volt. So ये हमारे पास वोल्ट के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं. Now we can define the potential difference as if an amount of work is required to move a charge q from one point to another. So mathematically we can define this term as V, which is potential difference, it is equals to work done on a unit charge W by Q. So ये हमारे पास इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. So अब अगर हमें डिफाइन करना है what is electric potential, so the electric potential at any point in an electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping it in equilibrium. किसी भी point का जो electric potential होता है वो equal होता है amount of work done while bringing a positive charge from infinity to that point. So वो उस
पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। Homework for today is you have to revise the topic, practice the related conceptual question, examples, and the numerical problems from the book. Thank you so much. I hope all of you have enjoyed today's lecture. For any kind of queries, you can write down your question in the comment section below. See you in the next video with a new topic. Till then, take care and Allah Hafiz.